लॉयर के साथ जो एसोसिएटेड है वो काफ़ी अच्छी स्टोरी है। तो वंस एन एक्ट्रेस वो बहुत गुस्सा हो गई थी प्रोड्यूसर और डायरेक्टर के साथ, और वो सेट पे बहुत ज़ोर ज़ोर से रैंट करने लगी और वो बोलने लगी कि हाउ दिस विल नॉट वर्क और एंड सो ऑन एंड सो फॉर्थ। सो विद वाइल एवरीवन इज लिसनिंग कि एक्ट्रेस को क्या प्रॉब्लम है और वो उनकी रैंटिंग सुन रहे हैं, लॉयर जो है वो जाते हैं कैमरा पे और रिकॉर्डिंग ऑन कर देते हैं। So he recorded that actress और फिर उन्होंने बाद में उस actress को उनका recording सुनाया। So this actress she got so like let's say embarrassed, उन्हें इतना बुरा लगा या फिर इतना effect हुआ जब उन्होंने अपनी खुद की recording को वापस सुना कि eventually she opted out of the project, वो project से बाहर चली गई and she was a very promising actress, काफ़ी अच्छा काम करी थी, पर eventually उनका काम भी जो है like she opted out of the movies altogether और उन्होंने काम भी करना बंद कर दिया, and that's how because of one lawyer we lost a really nice actress and a budding actress, right? So this is the story about the lawyer and the story about how a story about the story department also. So let's move on आगे। तो like every other person who wanted to make movies or who wanted to take a project, जो number 2 है उन्होंने project भी उन्हें भी project करने दिया, लेकिन lawyer ने जो movie बनाई वो इतनी अच्छी नहीं हुई, इतनी successful नहीं हुई। And therefore let's read an extract जो कि book में इसके बारे में लिखा हुआ है। Like so many of those who were close to the boss, he was allowed to produce a film, and though a lot of raw stock and pancake were used on it, not much came out of the film. So बहुत सारा pancake और raw stock use हुआ, लेकिन वो movie से कुछ ज़्यादा आया नहीं। Then one day the boss closed down the story department, and this was perhaps the only instance in all human history where a lawyer lost his job because the poets were asked to go home. So it's also a very, very interesting line, and it's something that's really, really funny and humorous in the essence of it. And what he's saying is कि boss ने eventually जो story department है उसको बंद कर दिया, और जब वो बंद हुआ तो ये ह्यूमन हिस्ट्री के अंदर सिर्फ एक इकलौता ऐसा इंसिडेंट होगा जहाँ पे एक लॉयर की जॉब चली गई क्योंकि पोइट्स को घर भेज दिया गया। So that's how we are done with the lawyer part and the story department part also. Let's move on to a really short part, poets, जो कि बहुत छोटा सा पार्ट है और मैं टेक्स्ट में से रीड कर देती हूँ ताकि आपको इजी हो जाए समझने में। Then we'll move on to the last 2 parts, which are very important part of the chapter, right? Let's come to poets. So poets के बारे में क्या बोलते हैं? That Gemini Studios was the favorite haunt of poets like S.T.S. Yogiyar, Sangu Subramaniam, Krishna Shastri, and Haridranath Chattopadhyay. It had an excellent mess which supplied good coffee at all times of the day and for most part of the night. So ये जो सारे नाम हैं poets के वो आपको मिल जाएंगे, आप ढूंढ लीजिए। तो वो कहते हैं कि Gemini Studios was a hub for all these poets who used to come here, क्योंकि उनकी कैंटीन बहुत अच्छी थी, वहाँ पे उनकी मैस में बहुत अच्छी कॉफ़ी मिलती थी। And those were the days when Congress rule meant prohibition and meeting over a cup of coffee was rather satisfying entertainment. Barring the office boys and a couple of clerks, everybody else at the studios radiated leisure, a prerequisite for poetry. So वो क्या कह रहे हैं कि कुछ तो ये वो एनवायरनमेंट था, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट, जहाँ पे कांग्रेस था और प्रोहिबिशन का एनवायरनमेंट था। तो वहाँ पे अगर आपको एक कॉफ़ी मिल जाती थी और आप एक कॉन्वर्सेशन कर लेते थे तो बहुत ही सेटिस्फाइंग एंटरटेनमेंट हुआ करता था। So which gives you a very like Marxist sense of how things used to be or how people used to be there, like very, very down to earth or very leisure seeking people also, which author says. So तो वो क्या कह रहे हैं कि ये जो सारे लोग जो वहाँ पे आते थे, कुछ लोगों को छोड़ के जो जेमिनी स्टूडियोज में काम करते थे, बाकी सब पोइट्स थे, क्योंकि वो सारा टाइम आराम करते थे, which is like resting is a prerequisite for poets, right? तो उसके बाद में बोलते हैं most of them wore khadi and worshipped Gandhi ji, but beyond that they had not the faintest appreciation for political thought of any kind. Naturally, they were all averse to the term communism. A communist was a godless man. He had no filial or conjugal love. He had no compunction about killing his own parents or his children. He was always out to cause and spread unrest and violence among innocent and ignorant people.
Such notions, which prevailed everywhere else in South India at that time, also naturally floated about vaguely among the khadi-clad poets of Gemini Studios. Evidence of it was soon forthcoming. तो वो क्या बोल रहे हैं कि ये सारे के सारे जो पोइट्स थे, इनमें से शायद किन्हीं लोगों को गांधी समझ में आता होगा और नहीं भी आता होगा, पर none of them were very fond of Gandhi, none of them were communists, so to say. और क्योंकि communism was like in the air उस टाइम पे, और sorry, anti-communism was in the air उस टाइम पे, so Gemini Studios का माहौल भी वैसा ही हुआ करता था. So when he's talking about everyone being a poet, everyone being an artist there, he's also talking about how politically, maybe active, or how politically aware all of these people were, या फिर politically charged is the right word, कि उनके अपनी ओपिनियंस हैं और वो डिस्कस करते थे चीज़ें और आराम से लेजर्स के अंदर काम किया करते थे, लाइक पोइट्स शुड टेक्निकली डू. सो एवरीवन वाज अवर्स टू अ टर्म कॉल्ड कम्युनिज्म, और इसका एविडेंस आने वाला है मॉडल रियार्मेंट आर्मी के 2 प्लेस के अंदर, और कितने फेमस हुए थे वो प्लेस साउथ इंडिया के अंदर. एंड and then like this is mostly majorly about these 5 themes. When you look at poets and when you look at story departments, like there is a lot of details इसके अंदर. तो आपको ये सारे के सारे डिटेल्स, इट्स गुड इफ यू कैन रिमेंबर देम. अगर आपको नहीं याद हो रहे हैं तो ये सारे डिटेल्स याद करने की जगह आप जस्ट याद कर लीजिए चीज़ों का, या फिर कुछ 1-2 नाम याद कर लीजिए, so which is good when you are attempting any answer in NCERT. We'll move on to the next 2 parts, which are very, very important now.